अस्सलाम वालेकुम भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू मेथी। ये है मेथी, ये है आलू, ये है टमाटर, ये है हरी मिर्चें एंड प्याज। आज हम ये बनाएंगे। इसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और काफ़ी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। जरा सब्र करो। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने पतीली में थोड़ा सा ऑयल डाला है। अपने हिसाब से आप डालिएगा। मैंने ऑयल डाला है एंड उसके अंदर बिल्कुल छोटी सी एक प्याज ली थी, क्योंकि मेथी में प्याज नहीं डलती है ज़्यादा, तो हमने सिर्फ टेस्ट के लिए बिल्कुल छोटी सी एक प्याज ली है। अब हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ इसे ब्राउन करके। अभी ये हो रही है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसे ब्राउन करेंगे। ठीक है गाइस, Hey y'all, come look at this. तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा प्याज का कलर चेंज हो रहा है और हम इसे लाइट ब्राउन करनी है। लाइट कलर चेंज हो रहा है। ठीक है गाइस, और इसमें और आप देख सकते हैं मैंने टमाटर काफ़ी सारे लिए। मेथी में टमाटर काफ़ी सारे डलते हैं। जितने आप टमाटर डालेंगे मेथी उतनी कड़वी कम लगेगी। ठीक है गाइस, तो टमाटर ज़्यादा डालिएगा क्योंकि अक्सर मेथी कड़वी बनती है। कुछ लोग मेथी नहीं खाते कड़वी की वजह से। वो कड़वी इस वजह से बनती है क्योंकि आप लोग टमाटर कम रखते हैं। तो आप टमाटर ज़्यादा रखिएगा जिससे आपकी मेथी कड़वी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इसमें टमाटरों का ही आधे से ज़्यादा टेस्ट होता है ताकि मेथी कड़वी ना हो। तो मैंने इस वजह से इतने सारे टमाटर लिए हैं। तो अगर मेथी बनाए तो टमाटर ज़्यादा डालिएगा उसमें ताकि वो कड़वी ना हो। तो आप देख सकते हैं अब ये प्याज जो है हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम इसे ब्राउन करेंगे। फिर इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे और अपनी हरी मिर्चें। ठीक है, 2000 years later. तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर टमाटर और वो जो हमने हरी मिर्चें काटी थी वो ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉफ्ट करेंगे और मैंने इसके अंदर ये लाल वाली गोल वाली मिर्चें भी आप डाल सकते हैं और ये वाली भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये वाली डाली है। ठीक है गाइस, ये ऑयल में डाल दीजिएगा। फिर ऑयल में थोड़ी सी ब्राउन करके फिर इसके अंदर प्याज और टमाटर ऐड करिएगा। तो मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं अब टमाटर सॉफ्ट होने के बाद हम इसके अंदर मेथी ऐड करेंगे एंड फिर सारे स्पाइसेस में ऐड करेंगे। ठीक है गाइस, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं। फिर टमाटर सॉफ्ट होने के बाद हम आपको फुल लुक दिखाते हैं टमाटरों की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने टमाटर अपने सॉफ्ट कर लिए। टमाटर सॉफ्ट करने होते हैं ताकि हांडी में साबुत साबुत नहीं रह जाए। और आपको तो पता है आजकल के टमाटर कितने ढीठ आ रहे हैं। तो इसको सॉफ्ट करने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के छोड़ देती हूँ। तो इससे जल्दी 2 सेकंड में ही बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, वरना आजकल के टमाटर गल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो अब हम इसके अंदर मेथी ऐड करेंगे और आलू। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आलू और मेथी ऐड कर दी है। तो अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे गलने रख देंगे। ठीक है, हम आपको इसकी फुल लुक दिखाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मेथी रेडी हो गई है। तो गाइस मैंने कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, सिर्फ मेथी डाल दी थी इसके अंदर। फिर मैंने स्पाइसेस में ऐड किया था कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और धनिया का पाउडर। ठीक है, ये चीज़ें मैंने ऐड करके इसको गलने के लिए लो फ्लेम पे रख दिया था। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू अपडेट मिल सके। तो
तो अब हम चलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा। और हमारी मेथी रेडी हो गई है। आप इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं इनमें गार्निशिंग के लिए, बट हमने नहीं डाली। तो ओके बाय।